all of you once again. Today we are going to revise the subtopic textile industry. The first point is it occupies a unique position in the textile industry, occupies a unique position because it contributes 14% to the industrial production. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक यूनिक सेक्टर है और उसका कारण ये है कि ये 14% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन देता है. Second point is it gives employment to approximately 35 million pupils. Direct employment from textile sector is about 35 million persons, which is very big contribution after agriculture sector. It is the second largest contributor to employment. Next point is it contributes about 4% to the GDP, gross domestic product जो है वो हमारे कंट्री का उसमें 4% जो है कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल सेक्टर का, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का. Next point is it earns foreign exchange of about 24.6%. We can round it off to 25%. 1/4 of the foreign exchange is earned through the textile industry. And next, it is the only industry which is self-reliant and complete in value chain. इसका मतलब जो है रॉ मटेरियल इंडिया में अवेलेबल है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पैकेजिंग है, सेलिंग है, सब कुछ जो है इंडिया में जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो आत्मनिर्भर है, सेल्फ रिलायंट है. सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड एज अ यूनिक सेक्टर इन आवर इकोनॉमी. Now we will start the new subtopic, cotton textile industry, which is part of textile industry, and we will learn one objective type question of 1 mark, which is the first cotton textile mill was started in 1854 in Mumbai. This is 1 marks question, and the question comes when and where the first cotton mill was started. The answer will be Mumbai, 1854. Now we will just check the historical background of cotton textile industry in India. So mostly handlooms. And power looms. Were used. Or almost 1600 power looms. And looms are there. Next thing is during First World War and Second World War there was high demand for cotton cloth. During First and Second World War, the demand for cotton was very high. Therefore, the Britishers started exploiting the cotton textile industry. They started establishing and exploiting the indigenous industries and
replaced the indigenous industries with their industries, and they forced us to purchase their machine-made goods. They took away the raw materials from our country and they sold the foreign goods. They sold the ready-made cotton garments in our country. So we were loser from both sides. That means our indigenous industries were also lost, and our countrymen had to purchase the finished goods from them also. So this is the historical background about the cotton textile industries. And your history teacher might have also taught you about the gomastas, the cotton weavers, their problems. Can anyone respond? हिस्ट्री बुक में क्या तुम लोगों को कॉटन वीवर्स के प्रॉब्लम या कॉटन फार्मिंग या कॉटन फार्मर्स के बारे में कुछ भी तुम लोगों को पढ़ाया गया है? नो सर। नहीं? नो सर। अच्छा ठीक है, अगर हिस्ट्री बुक है तो उसमें देख सकते हो कि वो कॉटन जो है प्रोड्यूसर्स एंड वीवर्स जो है वो कम्युनिटी जो है बहुत ज्यादा उसमें इम्पैक्ट देखा गया ब्रिटिश का, है ना। इंडिया के जो इंडिजिनस घरेलू उद्योग थे वो धीरे धीरे कमजोर कर दिए गए और उनके जगह में ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को स्टार्ट या उनको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, just now revised about the importance and historical background of cotton textile industry. So the next question that we want to learn is about why most of the cotton industries are located in Gujarat and Maharashtra. So again, we have to answer this question on the basis of industrial location and its factors. We have previously revised about iron and steel industry, why most of them are in Chota Nagpur Plateau. Similar to that question, here is another question, why cotton industries are located mostly in Gujarat and Maharashtra. The answer will be completed on the basis of the factors of location. All right. So now, due to availability of raw materials. Good. First point, due to very good. Due to availability of raw cotton. Second point, anyone? The moist climate of both the states. Climate, moist या humid. Humid climate favors spinning and weaving. Any other point? Availability of raw cotton from the black soil region of Maharashtra, Gujarat and parts of Madhya Pradesh. Next, moist and humid climate. Maharashtra and Gujarat have a coastal location. It is located near the Arabian Sea. Hence, the humid climate favors the spinning and weaving activities. During that process, the yarn or the fiber of cotton do not break and they can be twined easily. Any other factor? Due to port facilities. Due to port facilities. Very good. Due to port facilities of Mumbai and Kandla, the foreign trade becomes
easy. Availability of cheap and skilled labor. Do we get cheap and skilled labor? Yes, sir. Availability of cheap and skilled labor. And you can write more: efficient transport network, good power supply, and Sir, market. demand. Market, it means demand for cotton. Demand for the cotton cloth is everywhere in our country and also across the planet, across this globe. Other countries also demand Indian cotton very much. So Indian industries get an opportunity to flourish very quickly. Now we will learn a new question. It is there in the book. Why is it important for our country to keep the mill sector loomage lower? हमारे कंट्री में बड़े मिल की संख्या थोड़ी कम होनी चाहिए as compared to handloom and powerloom. Why is it important? Why we should not start big integrated mill in cotton industry? And this is the question. Why it is important for our country to keep the mill sector loomage lower than handloom and powerloom? बड़े मिल इंटीग्रेटेड मशीन से बहुत आसानी से कपड़ा हम बना सकते हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा सा कम बढ़ावा देंगे. आशिका कुछ बोलना है? Because powerloom and handloom provide employment to large number of people in the rural areas. Exactly, हाँ, एकदम करेक्ट आंसर है कि हैंडलूम और पावरलूम से हम रोजगार के अवसर बढ़ा सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैन बी इंक्रीज्ड. We are a country of very vast population size. So in order to create employment opportunities, we will allow powerloom and handloom in our country. And it is important, it is equally important to discourage or to disfavor the integrated mill. ठीक है, वेरी गुड आंसर. और कोई पॉइंट्स है? We write the answer because power looms and handlooms can increase employment in villages or rural areas. So it is important for our country to keep the mill sector loomage low as compared to powerloom and handloom. और कोई point? We can develop local handicrafts and
embroidery skills. लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड एम्ब्रॉयडरी स्किल्स। तो इंडिया में अलग अलग जगह का अलग अलग एम्ब्रॉयडरी स्किल है। जैसे कश्मीर में एक पर्टिकुलर जो है शॉल बुनने का काम होता है, बनारस में बनारसी साड़ी होते हैं, भागलपुर में सिल्क साड़ी का वीविंग होता है ना, मधुबनी पेंटिंग का एक ये है, कहीं एप्लिक है, कहीं बंधेज है, कहीं पे कुछ और भी ट्रेडिशनल जो वीविंग एंड हैंडीक्राफ्ट स्किल्स है उसको हम लोग जो है अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, स्कोप मिल सकता है। और इस तरह से लोकल जो आर्टिजन्स है और हैंडीक्राफ्ट्समैन है उनको हम जो है एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। इज इट फॉलोड? बड़े मिल का कपड़ा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना तो सकते हैं, क्लॉथ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन जो क्वालिटी है और जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप और जो स्किल है वो जरूर खत्म हो जाएंगे। किसी को कोई आइडिया है कुछ कपड़े वगैरह फेमस, कुछ इंडियन जो क्लॉथ है, वीवर्स है या कुछ स्टाइल्स है? साउथ सिल्क कितने लोग नाम सुने हो? बैंगलोर सिल्क, अच्छा चलो, हैंड इज रेज्ड, यू कैन अनम्यूट एंड रिप्लाई। बनारसी साड़ी, भागलपुरी साड़ी, ऐसे ही मुर्शिदाबाद सिल्क है, ऐसे ही आसाम का मुगा सिल्क है ना। और खादी में भी जो है, खादी ग्रामोद्योग से भी हम लोग जो है ट्रेडिशनल वीविंग और स्पिनिंग स्किल को बढ़ावा दे सकते हैं।